Good morning, students. Today's topic for the class is sexual reproduction in human beings. You have studied sexual reproduction in flowering plants and also you have studied the types of reproduction. So coming to the next topic, that is sexual reproduction in human beings. I'll start with the definition of reproduction. As we know that, what is reproduction? Reproduce. That means the process of producing new organisms. The process of producing new organisms from the existing organisms of same species. Reproduction क्या है बच्चों? The process of producing new organism from the existing organism of same species. This is reproduction. Reproduce मतलब दोबारे से बनना. ठीक है? This we have already done. Now coming to the topic human beings. Human beings कैसे reproduce करते हैं? Topic for the class. How human beings reproduce. So human beings reproduce by sexual method after attaining puberty. After attaining puberty. ठीक है, हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन. देन हमने पूछा कि हाउ डज ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस. तो ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड आफ्टर अटेनिंग प्यूबरिटी. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज प्यूबरिटी. These kind of questions CBSE may ask you in 1 mark question. What is puberty? देखो puberty क्या है? It is the time period during which adolescent मतलब childhood से adulthood, that is the age of 10 to 19 years or 10 to 24 years also. The time period during which adolescent becomes sexually mature and capable of reproduction. देखो मैंने बोला ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड आफ्टर अटेनिंग प्यूबरिटी. प्यूबरिटी कौन सा एज है? इट इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच एडोलेसेंट बिकम सेक्सुअली मैच्योर, सेक्सुअली एक्टिव एंड केपेबल ऑफ बीइंग डूइंग रिप्रोडक्शन. दैट मींस यहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विल स्टार्ट डेवलपिंग. दे बिकम फंक्शनल, दे बिकम सेक्सुअली मैच्योर. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्यूबरिटी. आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज ऑफ प्यूबरिटी, तो यहां पर आप क्या लिखोगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फंक्शनल, दे बिकम सेक्सुअली मैच्योर. इसका मतलब है कि व्हेन दे स्टार्ट डेवलपिंग, दैट मींस मेल में अगर बात करते हैं, मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा? आई एम यूजिंग दिस एब्रिविएशन आर फॉर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इट इज टेस्टिस. और अगर मैं फीमेल की बात करते हैं, फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा? इट इज ओवरी. So we are discussing that puberty के टाइम पर when the reproductive organs start developing, they become sexually mature. तो that means वहां पर क्या डेवलप हो रहा है? मेल में टेस्टिस डेवलप हो रही है एंड फीमेल में ओवरी डेवलप हो रही है. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि सेक्सुअली मैच्योरिटी का मतलब क्या है बॉडी में. दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का बनना, द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ओके, नाउ सी, अगर ये फंक्शनल होता है, if I am saying that these reproductive organs are getting functional and they are getting sexually mature, so what is the use of that? That means यहां पर testes मेल बॉडी में प्रोड्यूस करेगा मेल सेक्स हार्मोन which is known as testosterone. Again, it is 1 mark question CBSE. फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, पूछता ही है ऑल्टरनेट ईयर पे. ओवरी विल प्रोड्यूस
female sex hormone that is known as progesterone or estrogen. Again, important. CBSE may ask you anyone out of these, male or female. So हमने बोला कि मेल रिप्रोडक्टिव का बनना, उसका फायदा क्या होगा? Testes will produce male sex hormone that is testosterone, and female reproductive organ that is called ovary will produce female sex hormone known as progesterone or estrogen. Now the question is, what is the use of producing these hormones? As soon as the hormones get developed, they will produce in the development of secondary sexual characters. I am using this word, secondary sexual characters. So hormones will start developing secondary sexual characters in both male as well as females. What is the meaning of secondary sexual characters? These are the changes that we are able to observe when the individual reaches at the age of puberty. Matlab, when this reproductive phase starts, so there are certain changes which are common in both boys and girls. We are able to observe those changes, and those changes are known as secondary sexual characters. Student, आप जब भी साइंस पढ़ो, बेसिक से बेसिक आपको जानना है. आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए what are secondary sexual characters, so yeah, they are just the changes which we observe during this reproductive phase. Okay, as we are discussing, students, there are development of secondary sexual characters, matlab the changes which we are able to see in both male and females at the age of puberty or the reproductive phase. So we have some common changes in both boys and girls. That means thick hair growth in armpits and genital area, thinner hair appear on legs, arms and face, oily skin and appearance of pimples. These characters are also mentioned in the NCERT. You must read this paragraph. Okay. If I talk about specific changes in boys, so it is thick hairs will get grow, boys get crack, and girls may there is a start of menstruation. This we will study in detail in this chapter. Menstruation, अभी बस आपको वर्ड ध्यान रखना है, अभी मैं डिटेल में हम इस पर डिस्कस करेंगे. ठीक है. Now these are the changes which are common in both boys and girls, and they are the specific changes in boys and they are the specific changes in girls. You have to read this paragraph as well as the changes in boys and girls from NCERT. It is very important. Sometimes this type of question may get asked in the boards. Okay. It is important. Now see. अभी क्या है, प्यूबरिटी की अगर एज की बात करें मेल्स में, प्यूबरिटी एज अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो इट इज 13 to 14 ईयर्स. ओके. और अगर फीमेल्स की बात करते हैं तो इट इज 10 to 12 ईयर्स. ये भी पूछते हैं कि मेल में प्यूबरिटी का एज क्या है, इट इज 13 to 14 ईयर्स एंड फीमेल्स में इट इज 10 to 12 ईयर्स. एक और चीज है कि इंडिविजुअल डेवलप कैसे होता है. तो होता क्या है, देखो एक अनदर फंक्शन हम पढ़ रहे हैं कि मेल में जो टेस्टिस होती है, एक तो वो मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड, एंड अनदर दे प्रोड्यूसेस स्पर्म्स. फीमेल ओवरी प्रोड्यूसेस एग, and the fusion of sperm plus egg result in the formation of zygote that develop into individual. So male testes produces sperms as well as male sex hormone, and female ovary also produces egg as well as female sex hormone. The fusion of sperm and egg result in the formation of zygote, and the entire process, the fusion of sperms, egg resulting in the formation of zygote, is known as fertilization. It is known as fertilization, and the zygote develops into individual. This is the basic concept and the introduction part of sexual reproduction in human beings. For this entire process,
we have a specific male reproductive system and female reproductive system that we will discuss in our next class. So for today, students, sexual reproduction in human beings, I have just explained the introduction part. You just go through the NCERT, whatever I have explained in this video. Okay, thank you, students.